Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and the third number is 2342 1050. Our listeners from outside Delhi, please add 011, the STD code, before these numbers. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र की ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की कारोबारी खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं सोनू सूद। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Foreign funds pump in 9,000 crore rupees in domestic equities in the month of November. Primary market continues to witness animated investment, with 48 companies raising 45,000 crore rupees in this calendar year till November. And the Brent crude futures drops over 2% in the past week. विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस कैलेंडर वर्ष के आरंभ से अब तक नवंबर महीने में 48 कंपनियों के आईपीओ की जोरदार खरीदारी से प्राथमिक पूंजी बाजार ने 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 2% से अधिक नीचे आई। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विदेशी कोषों की दिलचस्पी भारतीय पूंजी बाजार में एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। विदेशी कोष की ओर से जोरदार लिवाली भारतीय पूंजी बाजार में देखने को मिल रही है और इस वर्ष नवंबर महीने में 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। हालांकि श्रोताओं, इससे पहले के जो 2 महीने रहे थे, अक्टूबर और सितंबर, उसमें हमने पूंजी जो विदेशी कोष हैं उनकी ओर से पूंजी निकासी देखी थी और उनकी ओर से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे इससे पहले भी। लेकिन नवंबर महीने में उनका रुझान फिर से जो वापस लौटा है, उसके आंकड़े हम आपको देना चाहते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने पिछले महीने डेट मार्केट में 14,860 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था, जो पिछले 6 वर्षों के दौरान 1 महीने की अवधि में सर्वाधिक है। यानी डेट मार्केट में 6 वर्ष में सबसे बड़ा पूंजी जो आकर्षित करने का क्रम हमने देखा, वह भारतीय पूंजी बाजार में डेट मार्केट में देखा और वो 14,860 करोड़ रुपए की राशि थी। इसका मूल जो कारण बताया जा रहा है वह है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखना और अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड के मूल्यों में भी लगातार बदलाव, यानी कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना। इन्हीं सब मुख्य 2 कारणों के चलते एफपीआईज ने भारतीय पूंजी बाजार की ओर रुख किया है, ऐसा विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है। इसके अलावा कुल मिलाकर वर्ष 2023 में एफपीआई ने 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। इस तरह विदेशी कोषों का रुझान भारतीय बाजार में एक बार फिर बना हुआ है। Well, Manoj, I mean, this is, a very clear indication. The FII's flows are back in the Indian market, and that is being reflected in the rebound of the Indian market also. If we see, in November, Sensex has risen nearly about 2,500 points after being a laggard in the month of October. So this is reflecting the macroeconomic buoyancy that we are seeing. If we look at
any numbers, the latest numbers, if we look at the GDP numbers. Now, GDP numbers, it was expected that after 7.8% growth in quarter one, which is July to September, beg your pardon, April to June, it was 7.8% growth. It was expected that in the next quarter, the second quarter of financial year 2024, that is July to September, there will be a shortfall in the GDP growth. It will probably be around 7 or little below 7%. Those were the projections which were being given by all agencies, including RBI. But we saw that when these figures were released last week, when Thursday, in fact, this week, Thursday, the week gone by, when the GDP figures were released, it was a pleasant surprise for every Indian, including the government agencies, the government, the central government, RBI, because we found that in the second quarter, the GDP growth was at 7.6%, which was much higher than what was estimated by all agencies, domestic and foreign. And we see that this is being reflected into the macroeconomic figures that we are seeing, be it PMI figures, PMI manufacturing, that has consistently stayed above 50, which shows expansion. And we saw that the result of this GDP numbers saw a great boost in the markets, a great rebound in the markets on Friday. And now the results which have come, the election results, which are coming out, in fact, which are in the process of being declared, and we are bringing you live commentary on radio. It is being, 5 states went to elections last month in November, and 4 states, which is Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Telangana, those results are being declared now. Mizoram, of course, they'll be coming out tomorrow. They were also supposed to come out today, but being a Sunday, the request was made to the Election Commission, which was acceded to by the Election Commission, that the results be deferred by a day, because Sunday is a very important day for Christians. So the results will be coming out tomorrow for Mizoram. But whatever results have come out till now, they are showing stability in the Indian political scene. In 3 major states, BJP is leading, and this kind of political stability is a very big factor for the markets, for the investors, domestic or foreign. Wherever there's an election coming, there is a certain uncertainty in the market related to what the elections will bring forth. Will there be a hung assembly in any state, or what kind of results will be forthcoming? And these results, I mean, as we see it, what do you say, Manoj? You feel these results will really give a big boost to the markets, which already were very, very positive because of the GDP figures which came out on Thursday. सोनू, आप जो कुछ अनुमान लगा रही हैं वो बहुत नज़दीक बाजार की अपेक्षाओं पर लग रहा है, क्योंकि बाजार हमेशा विश्वास करता है स्थिरता में। स्थिर सरकार होती है तो बाजार की चाल थोड़ी तेज़ हो जाती है, और आज जो रुझान निकल के आए हैं, परिणाम दिख रहे हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न सीटों पर, वह दर्शा रही कि केंद्र की सरकार के लिए एक बल देने वाला, बहुत बड़ा बल देने वाला फैक्टर होगा, और उस बड़े बल देने वाले फैक्टर से कुल मिलाकर जो बाजार है उसे अच्छा लगेगा। यहाँ श्रोताओं, हम आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर रविवार के दिन हम आपसे म्यूचुअल फंड पर बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हम आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित खबरें और फ़ोन कॉल नहीं ले पा रहे हैं। इसका हमें खेद है, और हम आपसे जो आज परिणाम निकलकर सामने आए हैं विभिन्न प्रांतों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से हम उसी पर चर्चा अपनी आधारित
कर देंगे? Absolutely, Manoj, because that is a factor which not only the entire country, we can say the investors all over the world, FIIs are a very major sector who invest into the markets, and everybody's eyes are on that because these results are also seen as a precursor to the general elections which are coming next year. And India being one of the, not one of the fastest growing major economy in the world, India has literally become one of the engines of the world growth, which is something, we could only dream of a few years back. But now we have come to this stage where Indian domestic market is seen as a big market by the entire world, and the policies of the current government, where Atmanirbhar Bharat was brought in when the COVID pandemic struck, and PLI scheme, production linked incentive scheme, all these schemes of the government, various schemes which were helping the farmers, women, youth, the underprivileged people of the country, creating jobs, creating job opportunities, creating credit facilities, easy credit facilities for budding entrepreneurs, giving a push to startups. All that has created an ecosystem where we find that India has become a very, very robust economy, and this has been recognized by no less than International Monetary Fund, by World Bank, in fact all the international agencies. बिल्कुल ठीक कह रही हैं सोनू आप। कुल मिलाकर जो भारत में बदलाव हुआ है वो कई स्तरों पर हुआ है। इसे यदि हम ठीक से आकलन करना चाहें तो बिल्कुल जड़ के स्तर पर, यानी जो आम आबादी है भारत की, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। उसके अलावा प्रशासन की ओर से, विशेष रूप से केंद्र प्रशासन की ओर से जो ढांचागत सुधार किए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान जो कुछ योजनाओं का रहा है उसमें से एक जैम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि व्यक्ति का एक आधार संख्या होना, उसके पास एक बैंक खाता होना और उसके पास एक मोबाइल फोन होना। इस तीन के माध्यम से, इस तीनों के एकीकरण के माध्यम से जो बड़ा बदलाव हुआ वह केंद्र सरकार की ओर से चलने वाली योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचने लगा, और आम आदमी तक जब उसके अपना अधिकार मिलता दिखता, उसे भोजन मिल रहा, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, और उसके लिए उसकी जो बचत पहले घर में रह जाती थी अब बैंकों में रह रही है, तो उसकी आर्थिक खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है वैसे ही वही उद्योगों के क्षेत्र में भी गया है। तो उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियों के लिए जो विशेष योजनाएं बनाई गई, डूइंग जो बिजनेस है, यानी कारोबार नया खड़ा करने में जो सहूलियत दी गई प्रशासनिक, उसका लाभ उद्यमियों को मिला, और वह आज के चुनाव में बहुत साफ साफ दिख रहा है। And in fact, Manoj, it is to the credit of the government, it is to the credit of RBI that they have never gone into complacency, despite the fact that they were able to curb inflation to a great extent, and now inflation is in that range of 2 to 4 plus minus 2%. But still, recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the government, RBI, they are constantly keeping an eye on US interest rate policy and the currency exchange rate, despite the local macroeconomic indicators being very robust due to strong domestic demand. So this is a very, very, you can say, approach of the government, if we sort of equate it with games and cricket, that even when you're winning, you should never let your guard down. And that is the kind of approach which the government seems to be taking, and which I think will never fail. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दरअसल जब एक केंद्र के स्तर पर कमान कसी हुई रहती है और नजर सधी हुई विभिन्न क्षेत्रों पर रहती है, आम आदमी से लेकर विशिष्ट आदमी तक हर किसी के ऊपर उठने का, उसके विकास का रास्ता खुलता नजर आता है, तो वो चौतरफा तरक्की हर दिशा में, हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। विभिन्न जो वैश्विक संस्थान हैं, विशेष रूप से आर्थिक कहले संस्थान हैं, उनकी ओर से भारत की यही दशा देखी जा रही। पिछले दो केंद्र के कार्यकाल को, अब तीसरा कार्यकाल 24 से शुरू होने वाला है, तो इस 2 कार्यकाल में पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत में नीतिगत स्तर पर आम आदमी से लेकर विशिष्ट आदमियों तक के लिए, सबके लिए प्रावधान कैसे किए गए हैं। एक, प्रशासनिक सुधार किया गया। दूसरा, जो जहां पर यानी जो धन था, रिश्ता हुआ
कहाँ बह जाता था उसका पता नहीं लगता था। यानी भ्रष्टाचार की हम सीधे बात करें तो भ्रष्टाचार जहां जिस किसी स्तर पर हो सकते, यदि कारोबार की ओर से कर चुराए जा रहे हैं तो वहां भी कमान कसी गई है, यदि किसी लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल रहा था तो वहां भी कमान कसी गई है। यानी चौकसी बरती गई है हर स्तर पर। उसका परिणाम हमें भारत की ऊपर उठने की दिशा में, ऊर्ध्वमुखी होने की दिशा में हमें बहुत साफ साफ दिख रहा है। And Manoj, this is at a time when there are a lot of headwinds, global headwinds, be it the geopolitical situation and with Russia and Ukraine, or whether it's Israel and Hamas problem. If we see in the eurozone, just to give a comparison, in eurozone the PMI manufacturing in November was 47.1, which was 6th month of contraction, and services also saw similar contraction. Now one can say that the sanctions which Europe imposed against Russia, maybe they have worked as a self goal, and we have seen this kind of an impact. But India, with its policy of not supporting any kind of injustice, but at the same time being mindful of having to look after its huge population. That's the stand which the government took. It was firm in that stand, and ultimately the world also started appreciating that stand. And that shows us that our PMI manufacturing is 55, and for the 8th month running we are in the expansion mode. So definitely a lot of government policies have to be lauded. The firmness which the government showed, the determination which the government showed, nation first, the approach which the government showed instead of being trying to look good or populist, that certainly is appreciable, and it is being appreciated by the entire world now. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचान की है कि यदि हम वैश्विक व्यवस्थाओं को देखें तो यूरोप में जो औद्योगिक रूप से आगे बढ़े हुए देश थे, वहां के आंकड़े ये दर्शा रहे कि वह रूस के विरुद्ध जो खेमेबंदी कर रहे थे उसका लाभ होने के स्थान पर उनको कुल मिलाकर जो लाभ था वह नहीं मिला, और घाटा ही उनको, आपने सेल्फ गोल की बात की, वो वाकई उनके लिए घातक ही सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका में यदि हम देखें तो अमेरिका की भी स्थिति कुल मिलाकर ज्यों-ज्यों कहने की दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, कुछ वैसे ही हालात हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको किस तरह वो निपटा पाएंगे। वैश्विक परिस्थितियों में जो नए नए संघर्ष के ठिकाने उभर रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा और जो समय लग रहा है, उससे कुल मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। जबकि भारत अपनी आंतरिक शक्तियों के कारण, अपने विशाल बाजार के कारण और अपनी उभय दृष्टि के कारण, चाहे वह रूस यूक्रेन का संकट हो या हमास और इजराइल का संकट हो, भारत तटस्थ होके रहा है और अपने हित को, अपने देश के हित को और विश्व के हित को उसने एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है सफलतापूर्वक। हमारे विदेश मंत्री रहे हैं, उनका रवैया हमेशा बहुत साफ, सुलझा हुआ और स्पष्ट रहा है कि यूरोप के चुनिंदा देश यदि रूस के तेल की ओर अपनी नीति कहते हैं कि भारत ना ले लेकिन वो खरीदते रहेंगे, तो वह नहीं चलने वाला। कई बार यह अमेरिका की ओर से भी सुझाव दिया गया कि भारत तेल खरीदने के मसले पर उन देशों के साथ ना करे जिन पर वह प्रतिबंध चाहते हैं। भारत ने उसका भी खुलकर विरोध किया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी भारत अपनी बात मजबूती से रख रहा है और दुनिया को सुनना पड़ रहा है। Absolutely, Manoj. And also, in a lot of critical sectors, we have made such great strides. Mobile phones, which were mostly more than 90%, they were imported a few years back. Now the production has multiplied to $44 billion. These were the figures given out by the IT minister a few days back, out of which $11 billion are exports. So that dream which the government saw of make in India, make for the world, not only make in India but also make for the world, that is coming true. We are seeing companies like Tesla, we are seeing big huge companies making these high-tech products who want to come to India. So India is being seen as a favored destination of the foreign investors, and that is not in no small measure to the government's efforts to improve the ease of doing business conditions in our country, to welcome foreign investors by making things easier
for them. And of course, we have labor, we have talent, we have technical pool also. So this kind of you can say a new kind of multilateralism is emerging, and India is really strengthening its position in the new global world order. आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विश्व व्यवस्था में यह अब नहीं चलेगा कि चुनिंदा 1, 2 या 4, 5 देश मिलकर पूरी दुनिया को अपने डंडे से चलाएंगे। विश्व व्यवस्था में भारत को, और भारत ही नहीं, प्रधानमंत्री सिर्फ अपने देश की बात नहीं करते बल्कि ये कहते हैं कि समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। तो जो दुनिया में वंचित देश हैं उनको भी उनकी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, और भारत आकार की दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो स्थान रखता है वह विश्व बिरादरी में सुनी जानी चाहिए और इसे मजबूती के साथ दिखाया जा रहा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेक इन इंडिया अभियान जब शुरू हुआ था उस समय में इस अभियान की आलोचना तो नहीं लेकिन शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था कि यह कैसा निकलकर सामने आएगा। लेकिन एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपना संयंत्र लगाने लगी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो संयंत्र लग रहे हैं वह भारतीय बाजार नहीं बल्कि विश्व बाजार में अपनी पहुंच बनाएंगे। इसी तरह चिप मार्केट को लेकर भारत को जो चिप का हब बनाने का अभियान शुरू हुआ है उसमें विश्व व्यवस्था में आने वाले दिनों में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके अलावा और जो हमारे नए स्टार्टअप आए हैं, एक चर्चा हो रही थी उसमें हमने पूछा कि ये स्टार्टअप जो रक्षा क्षेत्र हमारा हुआ करता था, हम विदेशी कंपनियों के हवाले उनकी इच्छा पर निर्भर हुआ करते थे, वहां पर हमारी स्टार्टअप कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं और रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे उत्पादन, खासतौर से जो एआई से जुड़े हुए हैं, जो यूएफओ से या कह लें कि सर्विलांस से जुड़े हुए हैं, जिन पर लागत कम आती है लेकिन जहां पर एआई का उपयोग होता है, जहां पर ज्ञान विज्ञान का उपयोग होता है, हमारी वैसी कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन न केवल पूंजी बाजार में कर रही हैं, अपनी लाभप्रदता के रूप में कर रही हैं और कई सारी यूनिकॉर्न कंपनियां उभर कर सामने आई हैं जो अब लाभप्रद दिखने लगी हैं निवेशकों को। तो पूंजी बाजार में जो एफपीआई का निवेश आ रहा है या विदेशी निवेश आ रहा है वह किसी एहसान के तहत नहीं आ रहा, वह भारत से मुनाफा कमाने के लिए आ रहा है कि वो अपना पैसा लगा रहे, यहां से बिकवाली करके जा रहे और उनके बिकवाली के बाद भी जैसे पहले भारतीय बाजार लुढ़क जाता था वह लुढ़कता नहीं है बल्कि मजबूती के साथ अपने स्तर को बनाए रखता है और वह कुल मिलाकर आगे बढ़ता चलता है। In fact, you put it so beautifully, Manoj, and what you're saying, that the Indian market is so robust that not only the foreign investors, we are not just dependent on them, the domestic investors, retail investors, domestic institutional investors who are in the markets through mutual funds, through SIPs, they are all lending a lot of strength to the markets, and we are seeing, therefore, that Nifty is already at an all-time high on Friday. And the primary markets are also performing very well. So let's have a look. The domestic equity market has witnessed an astounding surge in initial public offers, defying global economic uncertainties and underscoring the resilience of the Indian economy. In 2021, 63 companies went public, raising 1.2 lakh crore rupees. Despite global market challenges, 2022 witnessed 40 IPOs, accumulating 60,000 crore rupees. In 2023, as of November, 48 companies have already gone public, raising more than 45,000 crore rupees. This IPO surge extends to the SME space as well, with 2023 breaking records with 156 IPOs, raising more than 4,200 crore rupees. The increasing average ticket size in SME IPOs from 13 crores in 2021 to 18 crore rupees in 2022 and 25 crore rupees in 2023 indicates that promoters are seeking larger capital to fuel their growth ambitions, and investors are responding positively to these opportunities. This is such an important development, Manoj, because we need funding. The
private sector funding is a very important source of funding for the country's growth and development. And the primary market, this money which is coming in IPOs is going to really lead to the momentum of growth being maintained further. And the fact that in the SME sector, we are seeing such a robust response, that is a very, very heartening factor. That means that more and more entrepreneurs are rising, which the reflection of which we are seeing in the patent applications being approved at a faster rate, and the fact that innovation and entrepreneurship are being encouraged at every stage by the government, be it in the major cities or districts at the district level. So everybody is being encouraged. Even a person dealing in handicrafts or even making handicrafts is being encouraged to become an entrepreneur. हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। यानी यह दर्शा रहा कि एक और विदेशी संस्थागत निवेशक फॉरेन फंड्स निवेश कर रहे, तो वहीं जो घरेलू निवेशक हैं वह प्राथमिक पूंजी बाजार में खुलकर निवेश करने लगे हैं। यही साल भर पहले थोड़ी सी चिंता देखने को मिलती थी। बड़े बड़े निर्गम आते थे, आईपीओज आते थे और बाजार में पूंजी उगा कर जाते थे, वो पिट जाते थे। लेकिन अब उन स्थितियों में बदलाव आ रहा है। जो सूचीबद्ध हो रही हैं कंपनियां प्राथमिक पूंजी बाजार में, वह अच्छा पूंजी जुटा रही हैं अपने विकास के लिए, और उनमें पूंजी लगाने वाले जो आम लोग हैं वह छोटे शहरों से भी दिखने लगे हैं। यानी भारतीय पूंजी बाजार में जो पैठ है, वह जो युवा हमारे हैं जिनको बैंक में या कह लें कि जो आइडल पूंजी का निवेश होता है उसकी तुलना में पूंजी बाजार में, शेयर बाजार में निवेश करना समझ में आने लगा है। और उनके लगातार निवेश के चलते भारतीय पूंजी बाजार में हमारी जो छोटी बड़ी कंपनियां, और विशेष रूप से जो ये 156 आईपीओ हैं एसएमई सेक्टर की, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उसके अलावा जो बहुत छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनमें भी बढ़िया निवेश आ रहा है। वह जताता है कि लोगों का विश्वास अपने पूंजी बाजार पर, अपने उद्यमियों पर, और उन्हें जो इसके माध्यम से मुनाफा मिल रहा है वह लगातार बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर अच्छी दिशा की ओर जाते चरण हमारे दिख रहे। So after discussing this improving and maturing investment climate in the country, let's move to the crude oil prices, which are a very major metric on which the country is always concerned about, because we import a lot of oil. Global crude oil prices fell nearly 2% during the week, with the Brent crude futures for February ending the week at $78.88 a barrel, dropping 2.1% in the past week. The US crude futures closed the week at $74.07 a barrel, slipping nearly 2% in the week gone past. This is good news, Manoj, that there was this fear that due to the geopolitical conflicts, the oil prices will really go up, and they did spike, but they have stabilized now, and below 80, according to our experts, below $80 a barrel is comfortable for India, for our fiscal position, and so we should celebrate that and hope that this level is maintained in the future also. तेल देखो, तेल की धार देखो, तेल की राजनीति देखो। हम ये कहते हैं कि तेल उत्पादक देशों का जो एकाधिकार हुआ करता था, चाहे वह ओपेक देश हों या उसके अलावा अन्य संगठन, उनका एकाधिकार अब दरकता दिखने लगा है साफ साफ। अपने स्वार्थ के लिए जो अलग अलग खेमे हैं, बाजार में जो तेल की कीमतें भड़कनी शुरू होती हैं वह अब उतनी भड़क नहीं पाती, क्योंकि 6 महीना पहले $100 से ऊपर जाने की बात चर्चा की जाने लगी थी, वह अब घटती 80 पर आ रही है, जो अपने देश के लिए मुफीद होगी। यहां पर श्रोता हम आपको जानकारी देना चाहेंगे जो ताज़ा स्थितियां हैं राजनीति की, चूंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है। हम आपको विभिन्न प्रांतों की जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में जानकारी आपको दे सकते हैं, लेकिन समय हमारा कम है, इसलिए हमारे अन्य जो समाचार बुलेटिन है उन्हीं में आप ताज़ा, यानी हम सिर्फ यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है, और इसके साथ ही हमारा यह विशेष कार्यक्रम आपसे अनुमति लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है मुख्य समाचारों के साथ। Absolutely, Manoj. So before we close, a reminder of the headlines. Foreign funds pump in 9,000 crore rupees in domestic equities in the month of November.
Primary market continues to witness animated investment, with 48 companies raising 45,000 crore rupees in this calendar year till November. And the Brent crude futures dropped over 2% in the past week. And that is all in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.